Good morning, class. Welcome to today's video lesson. Students, I hope that all of you are fit and fine in your homes and you are taking care of yourself. Students, at this time, it's very important to stay healthy, fit, and sharp. Okay, we are going through a lot of challenges, and you should be ready to face any challenge that comes your way. Okay, so stay motivated, stay happy, and stay healthy. Okay, so now coming back to today's lesson. Today we have the adventures of Toto. Okay, to jog your memory, to remind you of what we did, I'd like to ask you a question first of all. Do you remember the name of the writer? Who was the writer of this chapter? Who's the writer? The writer is Ruskin Bond. Okay, Ruskin Bond has written this chapter. Okay, now moving on, let's talk about Toto and its story up to now. What we have read till now, we have read that first of all, grandfather he purchased Toto from a टोंगा ड्राइवर. ओके, जो टांगा चलाने वाला था उससे परचेज किया फॉर 5 rupees. देन he brings Toto and to his home and he hides it from the grandmother. Okay, so grandmother, she is unaware that Toto is in the house. Okay, she is unaware, it's a secret. And the writer and his grandfather, they are waiting for the right time to tell the grandmother that yes, we have a monkey in the house. Why they are waiting for the right time? Because otherwise the grandmother, she will create a huge fuss. Okay, she's gonna create a large fuss and it will be very problematic for the grandfather. Okay, moving on. Then what happens? So the grandfather and the writer, they tie Toto to a peg in the wall. Okay, but what happens? Toto wrenched the peg out of the wall and only the socket is left. Okay, and he also tears the writer's school blazer. Okay, so Toto is very naughty, and after that the biggest surprise is grandfather, he is not at all angry, he is happy. He feels that if Toto would have been given more time, then he would have made a rope and escaped. Okay, so you can see that the grandfather, he loves Toto. Okay, now dear students, we are going to read forward and I hope you are enjoying this chapter because it's a very interesting chapter, and let's read it and enjoy today's class. His presence in the house still a secret, Toto was now transferred to a big cage. So अब तक उसकी प्रेजेंस जो थी वो एक सीक्रेट थी, किसी ने भी नहीं बताया था ग्रैंडमदर को, राइट? सो क्या किया गया अब? दैट टोटो वाज ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स. ओके, सो सर्वेंट्स क्वार्टर्स में एक लार्ज केज था, वहां पे टोटो को ट्रांसफर कर दिया है, वहां पे टोटो को भेज दिया है. Where a number of grandfather's pets lived very sociably together. So in that cage, a lot of grandfather's pets, okay, they lived together. Social, वो एक साथ रहते थे. grandfathers के काफी सारे pets उस केज में रहते थे और वो sociably रहते थे एक साथ. Okay, sociably here means with social interaction harmony, मतलब वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से, आराम से, शांति से रहते थे. ओके, सोशेबली विद सोशल इंटरेक्शन एंड हार्मनी. A
tortoise, see now, see the animals who are living in that cage. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel. Tame squirrel means जिसको डोमेस्टिकेट कर लिया गया है, जिसको सिखा दिया गया है कि हाँ इंसानों के साथ कैसे बिहेव करना है, उसको कहते हैं टेम करना, सिखाना. एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट. ओके, सो थोड़े टाइम के लिए जो राइटर है उसकी पेट गोट भी साथ में रहती थी. बट द monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So again, Toto is very naughty. हमें पता चल रहा है कि Toto is very naughty. Why? Because पहले उसने स्कूल ब्लेजर फाड़ा, right? Earlier he had torn the school blazer of the writer, and now he is not allowing anyone, any of the pets in the big large cage to sleep at night. Okay, he is not allowing anyone. He is making them, he is keeping them awake. Okay, वो उनको जगा के रखता है, वो उनको सोने नहीं देता है. Okay, why? Because Toto is a naughty monkey. I hope that none of you are like Toto. Okay, if anyone there is a naughty monkey, please stay extra safe, because your parents might know how to tame you. Okay, so don't be a naughty monkey while you are in your homes. Okay, moving on. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. Companions means जो साथ में होते हैं. Okay, so grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur. So earlier pension collection का क्या सिस्टम था कि जो जिसको पेंशन लेनी होती थी उसे जाना पड़ता था पेंशन लेने के लिए किसी भी बैंक वगैरह में. अब तो ऑनलाइन ट्रांसफर्स होते हैं, लेकिन पहले फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था. सो ग्रैंडफादर पेंशन लेने के लिए अब कहाँ जा रहा है? सहारनपुर फ्रॉम देहरादून. ओके, so grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. Now see, Toto is a very naughty monkey, and grandfather, he is taking Toto with himself. Why is he taking Toto with himself? Because he is aware that Toto is a very naughty monkey, and if Toto will be left alone, he will create a lot of trouble. अगर टोटो को अकेला छोड़ देंगे तो वो सबको परेशान कर देगा, और हो सकता है पीछे से जो राइटर है या जो सर्वेंट्स है घर में वो मैनेज ना कर पाए. एंड देन द सीक्रेट विल बी आउट इन फ्रंट ऑफ whom? The grandmother. Okay, that's why he is taking Toto along with him. Okay, वो सबने साथ में इसीलिए लेके जा रहा है ताकि ग्रैंडमदर को टोटो का पता ना चले. ओके, अनफॉर्चुनेटली I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. Okay, so unfortunately, unluckily, writer was not able to go with grandfather. Okay, accompany means to come along. वो उसके साथ नहीं जा सका. But later on, grandfather told him the story. Grandfather ने उसे बताया कि what happened on that trip to Saharanpur. A big black canvas kit bag was provided for Toto. So like we have school bags which are made out of canvas, a little plastic and a mixture of plastic and cloth. Okay, similarly that kind of canvas bag was provided for Toto. Okay, this with some straw at the bottom became his new abode. So वो जो ब्लैक किट बैग था जिसमें क्या किया गया कि कुछ स्ट्रॉज लगा दिए गए उसके बॉटम पे. स्ट्रॉज किस लिए लगाए गए? ताकि टोटो के लिए वो
सरफेस कंफर्टेबल हो जाए. ओके, लाइक यू माइट हैव सीन कि एनिमल्स के लिए जो हम पेट्स रखते हैं उनके लिए हम कुछ ना कुछ नीचे बिछा देते हैं ताकि उनको सरफेस कंफर्टेबल रहे. सिमिलरली टोटो के लिए ग्रास स्ट्रॉस बिछा दिए थे उस किट बैग की सरफेस पे. Became his new abode. Abode means home, घर. So वो जो ब्लैक कैनवस किट बैग था वो टोटो का नया घर बन गया. ओके. When the bag was closed, there was no escape. So जब उस बैग को क्लोज करते थे, it was not possible to escape. Escape means बाहर निकलना. तो बाहर जाना तो पॉसिबल ही नहीं था टोटो के लिए. But do you think Toto is so nice that it's not gonna try, right? The adventures of Toto is all about Toto, the naughty monkey, being naughty. Okay, so again वो अब naughty ही हो रही है. Naughty अपनी कुछ दिमाग से कुछ mischief करेगी, कुछ शैतानी आइडिया लगाएगा Toto. Okay, so let's find out what that is. Toto could not get his hands through the opening. So चलो अब first of all पहले चीज क्या हुई है कि जो ओपनिंग है, जो स्पेस खुला हुआ है उस किट बैग में, वहां से टोटो अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता. ओके. एंड द कैनवस was too strong for him to bite his way through. कैनवस जो वो क्लोथ है, जो जिससे मटेरियल है जिससे वो बैग बना है, इट वॉज टू स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था. एंड टोटो couldn't bite its way through. way through means कि बाइट करके उसमें से निकल जाना, किसी चीज के बीच में से निकल जाना. ओके, टू गो थ्रू समथिंग, उसके बीच में से निकल जाना. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor. So जो उसके efforts थे बाहर निकलने के, उससे कुछ ज्यादा नहीं हो रहा था. सिर्फ इतना हो रहा था कि वो जो बैग था वो रोल हो रहा था, गोल गोल घूम रहा था उसके फ्लोर के ऊपर. ओके, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था. सो यू सी टोटो was unable to escape. और occasionally jump into the air. So या तो वो रोल होता था फ्लोर पे या फिर वो जंप होता था, अप एंड डाउन होता था एयर में. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. Exhibition क्या होता है? Exhibition होता है display of something. Okay, exhibition is display of something. So वहां पे display किसका हो रहा था? It was the display of Toto. Okay, so लोग देख रहे थे कि हाँ बैग जंप कर रहा है, और किसी को पता थोड़ी था कि बैग के अंदर टोटो है. सबको ये था कि ये तो एक बैग है, बट ये नहीं पता था ना कि उसके अंदर एक मॉन्की है. एंड सो देयर वाज अ क्यूरियस क्राउड. जैसे अब कुछ भी होता है तो लोग इंडिया में देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं कि हाँ ये क्या स्ट्रेंज हो रहा है, कहीं पे रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया है. दो पर्सनली आई फील कि इट्स नॉट अ गुड आइडिया अब फॉर सिविक सेंस. अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और वहां पे हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, देन वी शुड नॉट बिल्ड अ क्राउड. ओके, बट in this situation, in this story, this is what is happening, that there is a curious crowd of onlookers. Curious crowd means willing to know. वो लोग जानना चाहते थे, वो लोग देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है. Okay, so they were willing to know what's going on, what's happening. And onlookers means जो देखते हैं, वहां पे रुक के देखने लग जाते हैं. Okay, जो लोग जा रहे होते हैं ऑनलुकर्स वो ही होते हैं. ठीक है, जो उस चीज को उस टाइम पे देख रहे होते हैं. टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर. सो सहारनपुर हैज कम नाउ. ओके, बट व्हाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल. सो अब इंसिडेंट कहां पे हो रहा है कि जब ग्रैंडफादर was producing his ticket at the railway turnstile. Turnstile क्या होता है? वो पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ एग्जिट होता है जहां से लोग निकल कर जाते हैं. ओके, सो निकलने से पहले टिकट
चेकर होता है उसको अपनी टिकट दिखानी होती है. ओके, सो ही वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल. ओके, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू अबाउट टर्नस्टाइल, जहां से लोग रेलवे प्लेटफॉर्म से निकल के जाते हैं, रेलवे स्टेशन से बाहर चले जाते हैं. ओके, दैट इज रेलवे टर्नस्टाइल. टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट. पोक्ड हिज हेड आउट मीन्स कि उसने अपने सर को बाहर किया, उसने सर को बाहर निकाला. आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन. सो उसने अपना सर बाहर निकाल कर अब क्या किया, टिकट कलेक्टर जो था उसको एक ग्रिन दी. ग्रिन मीन्स ब्रॉड स्माइल. उसने ऐसे पूरा हंस के दिखाया उसको. ओके, पूरे अपने दांत दिखा दिए उसने एंड गेव उसने अपनी पूरी स्माइल जो है वो टिकट कलेक्टर को दी. ओके, नाउ लेट्स सी. द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक. सो वो बेचारा आदमी जो था वो घबरा गया. ओके, ही गॉट सरप्राइज्ड. ओके, टेकन अबैक मीन्स वो घबरा गया, ही वॉज सरप्राइज्ड. बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस. सो अब उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो कि वो अब क्या करने वाला है. और ग्रैंडफादर को अनॉयंस, अनॉयंस मीन्स कि जिससे हमें तंग होते हो, जिससे हमें परेशानी हो, जिससे जो चीज हमें अच्छी ना लगे. ओके, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, सर you have a dog with you. Now see, what is he saying about Toto? He is calling Toto a dog. Imagine that you are in this situation, you have a monkey with you and someone says, oh, it's a dog. Don't believe such a person, tell them to get their eyes tested. Okay, don't believe if anyone tells you a monkey is a dog. And I don't know how the writer feels its presence of mind. I think he is implying sarcasm here. Sarcasm, वो मजाक कर रहा है, वो व्यंग्य कर रहा है. Okay, so he is implying sarcasm here by calling the ticket collector intelligent. Okay, so now see, the ticket collector, he has said that you have a dog with you. Okay, even though he has seen the face of Toto. Okay, I think by face anyone can recognize. अगर फिर भी कोई बॉडी पार्ट दिख रहा है तो शायद एक पार्ट से नहीं पता चले, but by face I think Toto couldn't have looked anything like a dog. Toto किसी डॉग के जैसे लग ही नहीं सकती थी. Okay. He said, sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly. So now that you have a dog with you, you have to pay for it accordingly. Dogs के लिए चार्ज होता है. So जो भी वो डॉग का चार्ज लगता है, that you'll have to pay. In vain did grandfather take Toto out of the bag. So बड़ी ही मुश्किलात में, बड़ी ही परेशान होकर, बड़े ही एक अनहैप्पी वे में ग्रैंडफादर ने टोटो को बैग से बाहर निकाला. इन वेन मीन्स जिसका कोई फायदा ना हो. ओके, एन एफर्ट विच लीड्स टू नो पॉजिटिव आउटकम्स. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog. So बिना किसी फायदे के ग्रैंडफादर ने ट्राई किया कि ये बताने के लिए टिकट कलेक्टर को कि मोंकी जो है वो डॉग नहीं होता. ओके, बट सी ही इज ट्राइंग. और इवन अ quadruped. Sorry, it's quadruped. This is quadruped. Okay, so quadruped क्या होता है? Animal with 4 legs. Because monkeys जो होते हैं वो अपने 2 लेग से करते हैं, और 2 जो होते हैं उनके आगे वाले लिम्स वो हैंड की तरह यूज करते हैं. ओके,
So जो भी, because he was a pet lover and he was so close to animals, he was very well aware. Okay, so dog जो होता है वो चारों पैरों पे चलता है, वो अपने इनका सिर्फ एज लेग्स यूज करता है, लेकिन monkeys अपने जो फॉरवर्ड लिम्स होते हैं उनका यूज एज हैंड्स करते हैं. Okay, so he was trying to tell the same to the ticket collector. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. So ticket collector जो है वो नहीं माना, he classified Toto as a dog and then grandfather gave the fare, किराया दिया of 3 rupees. Then grandfather, just to get his own back means अपनी pride के लिए, अपनी self respect के लिए, took from his pocket our pet tortoise. So जो pet tortoise था उसको अपनी pocket से निकाला and said, what must I pay for this since you charge for all animals? उसने कहा कि what should I pay for this? इस tortoise के लिए मैं क्या pay करूं? Because you charge for all animals, you are charging for Toto. Okay, so इसके भी पैसे ले लो. He was annoyed, he was trying to preserve his self-respect. Then the ticket collector looked closely at the tortoise. Okay, so अब ticket collector उसने बड़े ध्यान से देखा tortoise को. He is very carefully looking at that tortoise and analyzing it. Prodded means to push or to hold it or to press it. Okay, so उसने ऐसे भी किया, चेक करके हाथ लगा के देखा. With his forefinger means जो first finger होती है, gave grandfather a pleased means happy and triumphant means कि जिसमें उसे जीत हुई हो, look and said no charge. Okay, because वो भी अब उस ग्रैंडफादर से फाइट कर रहा है, वो भी ग्रैंडफादर को दिखाना चाहता है कि yes I am someone who has self respect and who matters. So वो दिखाने के लिए he says no charge, it is not a dog. So अपनी विक्ट्री प्रेजेंट करने के लिए, अपनी हैप्पीनेस प्रेजेंट करते हुए, अपनी विक्ट्री प्रेजेंट करते हुए, द टिकट कलेक्टर ही सेज नो चार्ज, इट इज नॉट अ डॉग. ओके, बिकॉज वो डॉग नहीं है इसलिए कोई चार्ज नहीं. ओके, सो स्टूडेंट्स विल बी रीडिंग टिल हियर ओनली. ओके, and I hope this part is clear to you. अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी पार्ट क्लियर नहीं है, then you can let me know in the comment section. Okay, so very quickly I'm going to ask a few questions about what we have read so that you people can know that how well you have understood, and if anything is not clear, please watch the video again or contact me, give me a call, give me a message, and we'll discuss whatever problem you may have. Okay, so let's start. My first question is, where was Toto transferred to after he tore the writer's blazer? Okay, where was he transferred to? And the answer is he was transferred to a big cage. My next question is, who used to keep everyone awake in the big cage? There was a big cage, and who was responsible for keeping all the animals awake at night in that cage? And I think you know the answer. The answer is Toto. Okay, my next question, why was grandfather going to Saharanpur? Why was grandfather going to Saharanpur? Because
he wanted to collect his pension. Okay. My next question is, how did Toto react when he saw the ticket collector? What did Toto do when he saw the ticket collectors? He gave a wide grin. He gave a big broad smile to the ticket collector. Okay. My last question is, Toto was classified as which animal? Toto was classified as which animal? And I think all of you know the answer, and the answer is dog. Toto was classified as a dog. Okay, students, so I hope this much is clear to you. Okay, again I'm saying to you, if you have any doubts, please give me a call or message, or you can also comment and let me know about any doubt that you may have. Okay, students, one more thing, please take care that you have to speak in English in your homes. Okay, beta, now that you have submitted your holidays homework as well, next internal assessment task is ASL. Okay, assessment of speaking and listening, and for that you have to practice speaking in English in your home, because if you will not do it, then you will face many difficulties in ASL. So please speak in English, and please read today's chapter. This chapter, it's a very interesting story, and we are going to continue it tomorrow. So yes, that's it for today. Stay safe everyone, take care of yourself. Goodbye.